Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, good morning students. Good morning. कैसे हो आप सब? So students, today we are going to discuss about the properties of materials. A very important, you can say a very important chapter in the strength of material, that is the properties of materials. Now students, before that I am going to give you a brief introduction about what the properties of materials are. So students, whenever we are dealing in strength of material, right? In strength of material, we are generally dealing with the materials which can actually deform, right? Because I have already told you that in engineering mechanics we are dealing with the rigid bodies, and in the strength of material we are dealing with the materials which can actually deform. So if you are dealing with a material which can actually deform, so a lot of type of properties they come into picture. The first is stress, the second is strain, the third is hardness, the fourth is toughness, fifth is resilience, sixth is elasticity, right? Then we have plasticity also, we have ductility also, malleability also, stiffness also, brittleness also. All these properties, creep also, they come into picture. And we need to discuss about all these properties, because students, whenever you are going to construct a structure, whether it is a steel structure or it is any structure which is based on or which is standing on some material, you should at least know that at what point of time the material is going to fail, right? After how many days, how many months will it become inserviceable, or how much is going to be the maximum deflection or maximum buckling load in a particular structure. So all these properties, they actually have to come into picture. Now students, without wasting any time, let us discuss about some of the important properties of the materials. And as far as the GATE exam is concerned, very frequently from this topic, this chapter, that is the properties of materials, at least one question is asked from this topic very frequently, right? I won't say that every year, but yes, every alternate year or every 2-3 years, one question is actually asked from this particular topic. And it is actually a very easy question. If you look at the previous year questions asked from the properties of material, they have been very easy questions. Clear? So now students, let us start with the properties of material. So students, in strength of material, we are going to deal only with the materials which can actually deform, right? Because if a material cannot deform, these types of properties will never come into picture. So if a material is going to deform, then only these types of properties are going to come into picture. And that is what we are going to see, some other types of properties, just the names which I have just taken right now. Clear? So students, in strength of material, whatever we are dealing with, we are going to deal with the deformable bodies. Deformable bodies, the bodies which can actually deform. And engineering mechanics, we are going to discuss, or we discuss the rigid bodies. Rigid bodies. Clear? Which cannot deform at all. What is the meaning of deformation? I will just let you know that okay, deformation का मतलब क्या है, इसके बारे में समझना बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज डिफॉर्मेशन अलग अलग टाइप की होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है. नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन के बारे में. देखिए जरा, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक मटेरियल है, ये स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, किसी का भी है, आपने यहां पे एक लोड लगाया P और आपने यहां पे एक लोड लगाया P, इक्वल एंड अपोजिट आपने लोड लगाया P, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस बॉडी. Now students, जब आपने लोड P लगाया, what is going to happen on this body? Just apply the common sense. So इसकी लेंथ हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी. Let us say original length was L. Let us say L was equal to 1 meter. Now जब आप इसको लोड लगाओगे, depending upon the intensity of the load, ये इसकी डिफॉर्मेशन, इसी आप मैं बोलूंगा, इसकी लेंथ हल्की सी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी विड्थ हल्की सी डिक्रीज हो जाएगी. तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई, अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये आपका y डायरेक्शन है, ये आपका x डायरेक्शन है, तो इसमें x डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रही है, एंड दिस L डैश इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस L. क्लियर? Similarly, if I talk about the y direction, students, this y direction, let us say original the width was equal to b, and now here it is equal to b dash. I will say that b dash will be less than b. So there is some deformation in the y direction also. There is some deformation in the x direction also. Clear? And due to these deformation, students, whenever a particular material is failing, all these deformations, they do come into picture. Because the definition of failure is that failure का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका member टूट गया. Clear?
आपने कोई कॉलम बनाया स्टील का, आपने कोई एल्यूमिनियम का कॉलम बनाया, आपका फेलियर का मतलब ये नहीं है कि टूट जाना, क्लियर, आपका फेलियर का मतलब ये भी है कि उसमें अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ फेलियर। तो फेलियर की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दी है, इसको हम थ्योरीज ऑफ फेलियर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर में अलग अलग साइंटिस्ट की क्या क्या डेफिनेशन है, सेंट विनेंट की क्या डेफिनेशन थी, क्लियर, रेनकाइन की क्या डेफिनेशन थी, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेस्का एंड गेस्ट थ्योरी। All these definitions we are going to discuss in the theories of failure. But I have just given you a little bit of hint that failure doesn't only mean a particular material has failed completely or it has broken or it has been crushed. Failure also means that if a particular material has exceeded a particular amount of deformation or the limited amount of or the maximum limit of deformation, then we also say that the material has actually failed. So these are some of the definitions of failure, students, clear, and that is why the study of deformation is very important, because until unless you do not know how a material is going to deform, how will you come to know, how will you apply the theory in the theories of failure, how will you apply the concept of deformation in theories of failure? Not possible at all, clear. So students, that is what the deformation is. So whenever you apply a mechanical force on a body, deformation, it comes into picture. Deformation might be elongation, might be contraction, might be twisting, might be bending, right? What is the meaning of twisting and bending? I will be letting you know in a short while. Clear? Now, what is the concept of mechanical force? Any force which wants to or which has to show its impact, but it cannot show its impact without coming in contact with the body. It means that a force has to be in contact with the body to show its effect is called as a mechanical force. For example, whatever the force I had shown here in this figure, it is a mechanical force because this force, it has to be in contact with this body. If this force is not in contact with this body, it is not called as a mechanical force. For example, the magnetic force. The magnetic force do not need to be in contact with the iron or do not need to be in contact with another magnet. Just by placing a magnet, for example, एक magnet आपका ये है, एक magnet आपका ये है, ये north pole है, ये south pole है, automatically they are going to attract because of the magnetic field lines. They do not have to come into picture in contact with each other. Just without coming in contact with each other, they can also show their effect. But that force is not called as a mechanical force. That has a different name, which is called as the magnetic force. Or similar goes with the electrical field, electric force. I hope you are getting it, right? Now students, mechanical forces, the forces which need to be in directly contact with the body are said to be as the mechanical forces. Now various types of deformations we can have. The first deformation is called as a pull. You are applying a force in this direction, you are applying a force in this direction, the material will get elongated and this type of deformation is said to be as a pull. This is a pull. Similarly students, if you are applying a compressive force, you are applying a force from here, you are applying a force from here, after some time this length will certainly decrease and this type of deformation is said to be as a push. Similarly student, there might be a twist also. Twist meaning is that, let us say this was a rigid support and from the rigid support एक आपने मटेरियल को हंग कर दिया आपने और आपने इस टाइप से आपने इसको ट्विस्टिंग दिया. फॉर एग्जांपल दिस इज द मटेरियल, ये मैंने इसको छत से लटका दिया और अगर मैं इसको ऐसे एक फोर्स प्रोवाइड करूं, सी, सो दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ ट्विस्टिंग. जो आप ये मॉर्निंग में जब आप शावर लेने के बाद जब टॉवल को आप एकदम ट्विस्ट करके उसका पानी निकालते हो ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं निचोड़ना, राइट? सो निचोड़ने को ही बोलते हैं ट्विस्ट. ट्विस्टिंग मूवमेंट यू आर अप्लाइंग और इस टाइप की डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी एज अ ट्विस्ट. सो ट्विस्ट आपका कैसे हो जाएगा? इट विल बी समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस. दिस इज व्हाट द ट्विस्ट इज. Clear? Now similarly students, you can also have a bending also. Bending is because of the transverse loading. Let us say this is a beam. अगर आप इस बीम पे यहां पे कोई लोड लगाओगे, what is going to happen? It is going to bend like this. So this is what is called as the bending. The beam has actually bent. Similarly, it is a cantilever beam. If you apply a load from here, it is going to bend like this. So this is said to be as a bending. ये भी एक तरह का deformation ही है आपका. Apart from it, you can also have a shear. Shear stands for, students, for example, this is a rigid surface. On this rigid surface, there is a
ब्लॉक, और अगर आप इस ब्लॉक पे यहां पे फोर्स लगाओगे एंड लेट अस से द ब्लॉक इज कंप्लीटली वेल्डेड विद द फ्लोर, इफ यू अप्लाई अ फोर्स इट इज गोइंग टू डिफॉर्म लाइक दिस, it is going to deform. So this is what the shear is. Clear? So अलग अलग टाइप की डिफॉर्मेशन हो सकती है. अब आपको शायद समझ में आया होगा कि जो डिफॉर्मेशन है आपकी, ये एक्चुअल में डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर. आप जिस हिसाब से मैकेनिकल फोर्स लगाओगे उस हिसाब से ही आपका जो है टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन आपका चेंज हो जाएगा. क्लियर? जिस हिसाब से आप मैकेनिकल फोर्स लगाओगे उस हिसाब से ही आपका टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन आपका चेंज हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, let us proceed further. Let us discuss about a very important property, or no, I won't say property, but it is an effect which is caused by these mechanical forces. And this effect is called as plane stress and strain. Now students, what is the meaning of this stress? Let us understand it. So stress is just the resisting force per unit area. It is very important to remember it. It is a resisting force per unit area, not the applied force per unit area. That is a very big misconception which the students have in their mind, that the stress is the applied force per unit area. It is not the applied force per unit area, it is the resisting force per unit area. Let us understand what is the meaning of resisting force. For example, students, this is a body and this body, इसको मैंने दीवार के साथ सटा दिया. This is a wall or a rigid support, इसको मैंने ऐसे सटा दिया यहाँ पे, right? And this is the surface on which the body is lying. This is the surface. Now students, what you have done is that you apply a force from here, that is P. If you apply a force here P, what is going to happen? Will this body move? You will say no sir, because it has a rigid support. Rigid support, let me write it here also. It is a rigid support. रिजिड सपोर्ट, एक दीवार है, दीवार से आपने इस बॉडी को एकदम सटा दिया, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये बॉडी मूव नहीं करेगा. क्लियर? बट ये जो आपने फोर्स P लगाया, ये कहीं तो जा रहा होगा ना. आप बोलोगे सर ये जो पूरा का पूरा फोर्स है ना, अगर मैं एक सेक्शन को काटूं इस बॉडी के अंदर, तो मुझे पता चलेगा दैट इनसाइड दिस बॉडी इज अप्लाइंग सम रेजिस्टिंग फोर्स सो दैट इट डजंट मूव. इट इज अप्लाइंग सम रेजिस्टिंग फोर्स. ये रेजिस्टिंग फोर्स कहां से आ रहा है? बेसिकली आपका यहां से आता है. From here, this resisting force comes from here. Clear? Now students, if you apply the equilibrium equation, because since it is not moving, it has to be in equilibrium. If you apply the equilibrium equation, summation of fx is equal to 0, you will find that this is r or plus r, this is p minus p, it should be equal to 0. So from equilibrium, r should be equal to p. Clear? Now what is the definition of the stress? Stress is defined as the resisting force per unit the cross sectional area. This is what the stress is. What is the cross section area? This area is the cross section area. So this is the basic definition of stress. But students, you tell me one thing. Do you think this is the correct definition? Clear? Do you think this is the correct definition? That is not the correct definition. Why? Let me make you understand, students. For example, this is a rigid support. On this rigid support, this is the body. और आपने इस बॉडी को स्टूडेंट्स इस एक्सिस के अबाउट खींचा, आपने यहां के अबाउट इसको खींचा, या फिर चलो मान लो पुश किया, बिकॉज अभी पुश का मैंने एग्जांपल लिया था. आपने इसको पुश किया पी लोड से. तो स्टूडेंट्स, ये जो पी लोड है इस एक्सिस के एकदम सेंटर पे लग रहा है, तो जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा वो भी एकदम सेंटर पे लगेगा. लेकिन आपने तो बोला कि सर जो स्ट्रेस है वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है. क्या ये रेजिस्टिंग फोर्स यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा, यहां पे भी सेम होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से दिस इज अ बॉडी, लेट अस से दिस इज अ बॉडी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी स्टूडेंट्स. अगर इस बॉडी को आप, लेट अस से दिस बॉडी इज कंप्लीटली फिक्स्ड ऑन वॉल, अगर इस बॉडी को आप सेंटर से पकड़ करके, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड है, अगर आप सेंटर से पकड़ करके ऐसे उसको घुमाओगे ना, तो देखो जरा, ये देखिए यहां पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आ गई है सेंटर पे, यहां पे कम डिफ्लेक्शन आ रही है. व्हाई? बिकॉज जिस पॉइंट पे आपकी लोड लगती है वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस आपका जनरेट होता है. क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस के अगर मैं एक दूसरी सरफेस को लगा दूं तो हर जगह बराबर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। जहां पे इसका सेंटर ऑफ एक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इस फोर्स का, या रिजल्टेंट लाई करेगा, वहां पे हमेशा ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स। It means that this stress definition is not completely correct. So what do we say, students, is that we determine the stress for a very small area, that is dA, and we say that stress is nothing but it is just dr upon dA, where dA tends to 0, or limit of dA tends to 0, limit of dA tends to 0. It means for a very small area, this particular thing is completely valid. But students, you want to calculate the stress for the whole cross section area. What will you do? From mathematics concept, I can integrate it. So if you integrate it, integration of this, you will be getting sigma is equal to integration of dr upon dA. And if you do the integration, students, what do we get here? We get the average stress. That is the average stress. So average stress becomes equal to resisting to Zotto. In class 11, there was a table in NCERT book, right? So what is the meaning of exa, peta, tera, giga, mega? Giga is 10 to the power 9, mega is 10 to the power 6, tera is 10 to the power 12, peta is 10 to the power 15, exa is 10 to the power 18. Then we have kilo is 10 to the power 3, deca is 10, right? And this deci is 10 to the power minus 1, centi is 10 to the power minus 2, milli is 10 to the power minus 3, micro 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 12, 10 to the power minus 15, 10 to the power minus 18, 10 to the power minus 21, 10 to the power minus 24. So student, this is what the table that we have already discussed in class 11th, right? अगर आपको याद नहीं है, आप ध्यान रखिएगा इसको students, right? Exa, peta, tera, giga, mega, kilo, deca, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, right? So this is the table which you should actually remember. Because एक बार JEE के एग्जाम में, SSC JEE एग्जाम, femto, the unit of the femto was actually asked. So femto is 10 to the power minus 15 meters. Clear? Standard is taken as meters. Clear? I hope you are getting it, students, right? So from here we have got this. That is, gigapascal is 10 to the power 9 Pascal. See here, it is 10. Giga stands for 10 to the power 9 Pascal. Mega is 10 to the power 6 Pascals. So from here you can convert whatever the unit want to convert. Also students, stress is neither a vector quantity nor a scalar quantity. We have given a special name to this quantity which is called as the tensor quantity. Now what is the meaning of this tensor quantity? Don't worry students, I have a different topic based on this, that is stress as a tensor quantity. We will be discussing there in much more detail that what is the meaning of this tensor quantity. So tensor quantity, for your kind information, they require at least 3 parameters or quantities to define them. For example, scalar, Ram is running with a speed of 10 kilometers per hour. Neither you know the direction, neither you know the plane. So that is a scalar quantity. Second, Ram is running with a speed of 10 kilometers per hour towards north. Now you know the direction, you know the magnitude also. So this type of quantity is said to be as a vector quantity. Ram is running in the with a speed of 10 kilometers per hour in the north direction on earth. Now this is what the tensor quantity is. So direction is north, magnitude is 10 kilometers per hour, earth. So the plane on which Ram is running. Clear? In the earlier two cases that was by default understood. But now when you give it another definition or another quantity or another parameter to define it, that is said to be as a tensor quantity. And tensor stress is also tensor quantity that we will be discussing in a little bit of later on. Clear? You will be getting that what is the meaning of tensor quantity in much more detail. Also students, stress can be of many types. One is the longitudinal stress, I have written here. Now what is the meaning of this longitudinal? Longitudinal का मतलब होता है जो सबसे बड़ा डायमेंशन है किसी बॉडी के अंदर, वो उसका longitudinal डायमेंशन होता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज अ बार. इस बार का सबसे लंबा डायमेंशन क्या है? आप बोलोगे सर इसकी लेंथ. तो वही लेंथ को मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल दूंगा और उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है दैट इज सेड टू बी एज अ लेटरल डायरेक्शन.
तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब क्या है। वो स्ट्रेस जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, दोज आर सेड टू बी एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस जो कि लेटरल डायरेक्शन में जनरेट होते हैं, दोज आर सेड टू बी एज द लेटरल स्ट्रेस। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो हैव द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस स्टैंड्स फॉर जो कि एक बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्लियर, परपेंडिकुलर है। एंड देन वी हैव द शियर स्ट्रेस जो कि इस बॉडी के ऊपर पैरेलल है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, लेट अस से ये आपके पास कोई बॉडी है, लेट अस से स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर, लेट अस से स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोई बॉडी है ना, इस बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट इज सेड टू बी एज द नॉर्मल स्ट्रेस, और जो इस डायरेक्शन में अगर मान लो कि जनरेट होता है दैट इज सेड टू बी एज द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय टाउ and normal stress is given by sigma m. So this is what the definition of the normal stress and the shear stress is. Now students, let us discuss about the basic concept of stress or strain. So students, the basic definition of strain is that strain is the change in dimension upon the original dimension, or I can say that how much the dimension is changing with respect to the original dimension. That is what the definition of a strain is. I hope you are getting it clear. Now students, let me further tell you once more. For example, ये आपके पास एक बॉडी था, इस बॉडी के ऊपर आपने इस तरफ एक लोड लगाया P, इस तरफ एक लोड लगाया P. Now students, इस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गया कुछ. Let us say this much is the total deformation on this body. This was the original length of this body, that is L. Now students, engineering strain is defined as, because generally we will be using engineering strain only, right? That is epsilon is defined as change in dimension upon the original dimension. This is what the engineering strain is. मतलब ओरिजिनल डायमेंशन जो आपने लिया और जो आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, that is what is said to be as the original dimension. Or strain. Okay. I hope you are getting it right. Now what is the unit of dimension? It is a unitless quantity, or I can say it is m0, l0, t0. So it is a unitless or the dimensionless quantity. That is what the strain is all about. I hope you are getting it, students. I hope you are getting it. So that is a dimensionless quantity. Now students, what are the various types of strains we have? We can have a longitudinal strain which is acting in the longitudinal direction. Longitudinal का मतलब क्या होता है? जो longest direction है that is said to be as the longitudinal direction, और उसके perpendicular जो direction that is said to be as the lateral direction. So ये longitudinal direction में भी आपका strain हो सकता है, ये lateral direction में भी आपका strain हो सकता है. इसके अलावा it might be a tensile strain also because of tensile forces. अब आप बोलोगे सर ये टेंसाइल फोर्स क्या है? ऐसी फोर्स जो कि एक बॉडी की लेंथ को लंबा कर दे, दैट फोर्स इज सेड टू बी एज अ टेंसाइल फोर्स, और विच इज जनरेटिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस इनसाइड अ बॉडी इज सेड टू बी एज अ टेंसाइल फोर्स. फॉर एग्जांपल, this is a pen. If you apply some force in this direction, this body will elongate. So whatever the force you have applied, which is acting away from this body, that is said to be as a tensile force. Clear? And what is a compressive force? Which you are applying towards this body. If you are pushing it from here, the length might decrease. So that force is said to be as a compressive force. And the strain getting generated because of the compressive force is said to be as a compressive strain. Clear? Similarly, students, you might also have a shear strain. Now, what is the definition of shear strain? This is basically, for example, let me show you here what is the meaning of this shear strain. Let us say this was a body, and on this body you have applied a shear force. Now, what is the meaning of this shear force? I have just already told you that, right? And this body is completely fixed with the base or the floor. The deformation is going to be, actually में the deformation कुछ इस type का होगा, but just for the easy purpose or for making it easy, the deformation is going to be like this. So shear strain is defined as this angle. This angle is phi. Let us say this deformation is delta L and this was your L. So shear strain is defined as delta L upon L, that is your 10 phi. And since the phi is very small, it will also be almost equal to phi. So this is what the shear strain is.
shear strain. This is what the shear strain is all about. Clear, students? I hope that you have got it. I hope that you have got it. And students, before proceeding further, let me request everyone that if anybody wants to prepare for the any competitive exam, I always recommend that before giving the actual examination, you should always give n number of mock tests. Clear? And we have a good news for you that you can go for the Testbook Pass. So we have one pass for more than 100 plus courses. You will be getting an access to 6,500 plus mock tests. A lot of selections we have already made in different competitive exams. You will also be getting a very good exam strategy as well as the expert guidance. And students, the Testbook Pass is only for rupees 499. It is once in a lifetime sale which is going on, and the Testbook Pass will be valid for next 3 years. Also, students, if anybody of you wants to prepare for the GATE Civil Engineering 2022 exam, then he or she can go to the Testbook site और वो आप अपने लिए ये कोर्स आप ले सकते हो. It is a paid course by the way, but you can enter this code which is flashing on your screen right now. That is Varun and a capital of K, और आपको 20% का flat discount आपको मिल जाएगा. Also, students, since it is a free series which is going on YouTube, so the only motivation that we had got from your side is that you like, share and subscribe. Also, you press the bell icon so that you can get the notification for all the new videos. So this is the only motivation that we have got from your side. Now let us again proceed further, students. Let us proceed further. So this is what we have discussed about the various types of strains we have, right? After studying the various types of strains, dear students, now let us discuss about the Hooke's law. What is the meaning of Hooke's law? What are the basic assumptions of Hooke's law? So students, Hooke said that if a material is isotropic, isotropic stands for that the chemical composition of the material is same everywhere. Clear? For example, this is a material. ये आपके पास कोई material है. इस material के अंदर क्या है? Molecules हैं, particles हैं, atoms हैं, right? तो सारे के सारे particles same हैं, सारे के सारे molecules same हैं, सबके बीच में distance same है. Everything is perfectly fine. जो कि nature में ऐसा कभी हो नहीं सकता. लेकिन that is what the assumption of the Hooke's is, right? अगर ऐसी आप assumption मान के चलोगे, this is said to be as an isotropic material. Isotropic material. So students, if the material is isotropic, number one. Number two, if you are not changing the temperature, अगर ये material 27 डिग्री सेल्सियस पे तो 27 ही रहेगा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद तक. कौन सा एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताऊंगा. नंबर थ्री, देर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन. आई होप ये आपको समझ में आ गया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये मटेरियल है, आपने यहां पे अगर लोड लगाया तो मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे होता है और उसके बाद जो आपका स्ट्रेस जो आपका रिड्यूस हो जाता है. यहां पे जाओगे तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आपका यहां पे होता है, बीच में होता है. क्लियर? इसको बोलते हैं स्ट्रेस कंसेंट्रेशन. एक सेंट विनेंट प्रिंसिपल है जिसने इसको दिया था, लेकिन हुक्स लॉ में मान के चलते हैं कि जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. इट मींस दैट टाउ एवरेज का कंसेप्ट जो है लिया गया है. क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स, एंड इफ द मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, एक मटेरियल जो रिजिड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफॉर्मेबल, बिकॉज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी आर डिस्कसिंग ओनली द डिफॉर्मेबल मटेरियल्स. अगर ये चारों प्रॉपर्टीज किसी मटेरियल में हैं स्टूडेंट्स, इट हैज बीन फाउंड दैट अप टू अ सर्टेन पॉइंट जो आपका स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्ट्रेन, shear stress directly proportional to the shear strain. Important. It is important. Clear? इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स एक मशीन का यूज होता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम. यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, that is also called as the UTM. Now let us understand कि UTM करती क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, this is a very big machine, that is a UTM. The UTM has
एक ग्रूव होता है, उसके अंदर एक जगह होती है जहां पे आप अपने मटेरियल को फिक्स कर सकते हो. लेट अस से दिस इज द ग्रूव on which you can fix the material. Inside this groove students एक होता है upper jaw, this is the upper jaw, और ये आपका फिक्स होता है पूरा एकदम ऐसे, राइट, और ये आपका है lower jaw, and this is what the lower jaw is. This is the lower jaw, this is the upper jaw, this is the upper jaw, and this is the lower jaw, lower jaw, and this is a machine. इसके बाद बहुत बड़ा एक लीवर भी कनेक्टेड होता है यहां पे, राइट. अदरवाइज आप इसको कंप्यूटर से भी एक्सेस कर सकते हो. आजकल तो कंप्यूटर मशीन्स आ गई. पहले जमाने में तो लीवर वाला होता था कि लीवर से अगर लीवर को घुमाओगे तो उसको पकड़ लेगा मटेरियल को, एंड सो ऑन, राइट. आपने यहां पे बीच में अपना मटेरियल लगा दिया, और ये जो जॉ है स्टूडेंट्स, इसने इसको यहां पे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है. क्लियर. इसने यहां पे इसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है. क्लियर. ये जो बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज द गेज डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड एज द गेज डिस्टेंस. मैं आपको दोबारा समझाता हूं, मैं आपको यहां पे इसको दिखाता हूं, राइट. फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है आपका, आपको इसने अपर जॉ ने यहां से पकड़ा हुआ है, इसको लोअर जॉ ने इसको यहां से पकड़ा हुआ है. तो जो बीच की जो आपका ये वाला जो आपको लेंथ बचा, दिस इज सेड टू बी एज द गेज लेंथ. गेज लेंथ. एंड द फॉर्मूला ऑफ गेज लेंथ इज 5.65 square root of A naught. A naught is the original cross section area. This is what the gauge length is. Important formula student, ध्यान रखिएगा. This formula is very 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 important. ध्यान रखिएगा उसको. That is the gauge length. Now ये आपका gauge length हो गया. अब आपने UTM के अंदर अपने मटेरियल को लगाया. अब क्या करोगे? या तो आप पुल करोगे या आप पुश करोगे. या तो आप दोनों जॉज को इस तरफ लेकर के जाओगे, या फिर आप दोनों जॉज को एक तरफ लेकर के आओगे. आपकी मर्जी, आप करना क्या चाहते हो. टेंसाइल करोगे तो ये करोगे, कंप्रेसिव करोगे तो ये करोगे. क्लियर. लेट अस से आप टेंसाइल करते हो स्टूडेंट्स. तो जब आप टेंसाइल करोगे तो क्या होगा? लेट अस से दिस इज द अपर जॉ, दिस इज द अपर जॉ, दिस इज द लोअर जॉ. ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? इस मटेरियल के अंदर आपके स्ट्रेस आपके जनरेट होंगे. क्लियर. और हुक्स बोलता है, आपने हुक ने बोला कि अगर आपके ये बहुत सारी एजम्पशंस अगर वैलिड हैं, आइसोट्रॉपिक है, राइट, द मटेरियल इज डिफॉर्मेबल, देयर इज नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, देन वॉट एवर द स्ट्रेस यू विल बी गेटिंग, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अप टू अ सर्टेन वैल्यू. दिस इज वॉट द हुक्स लॉ वॉज ऑल अबाउट. आई होप ये आपको समझ में आया स्टूडेंट्स. ये था आपका हुक्स का लॉ. क्लियर. अब जरा और समझते हैं इसमें, हुक्स लॉ में जरा और चीज समझते हैं. नाउ अब है आपकी बात इलास्टिसिटी की. तो देखिए जरा, आपका स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ गया, और जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो, एक आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो. सो सिग्मा इज इक्वल टू, जब मैं इसको हटाऊंगा, ई इंटू एप्सिलॉन, एंड दिस ई इज व्हाट इज कॉल्ड एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस इज कॉल्ड एज द यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity. Let me write it here also. E is equal to Young's modulus of elasticity. Elasticity. This is what the meaning of this E is. Clear? Or it is simply called as elasticity also. So what is elasticity? It is the ratio of the stress to strain. अगर आप इसको stress divided by strain कर दोगे तो ये आपका E आ जाएगा, and that is what the elasticity is. अगर आपसे कल को ये पूछे कि आपको 4-5 मटेरियल क्वेश्चन में दे दे, आयरन दे दिया, रबर दे दिया, स्टील दे दिया, गोल्ड दे दिया, और आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, तो आप ये मत बोल देना कि रबर है, कि सर आप मैं तो रबर को खींचता हूं तो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है. उससे पहले स्टील आ जाता है. स्टील में भले डिफॉर्मेशन बहुत ही कम हो, लोड हटाओगे तो एकदम से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा. एंड दैट इज व्हाट द इलास्टिसिटी इज ऑल अबाउट. क्लियर. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. 4 options were given: copper, iron, right, rubber, steel. Which one of the following is the most elastic? The correct answer was steel, because the Young's modulus of steel is much more higher as compared to the Young's modulus of rubber. और जिसका Young modulus जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा आपका इलास्टिक होगा. Clear students? I hope that you have got it. Now very important thing is that आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो कि स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर कर ले. आप बोलोगे सर इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है, आज तक कोई ऐसा नहीं बना. नहीं, बिकॉज बॉडी के अंदर रेजिस्टिंग फोर्स कैसी होगी इसको डिटरमाइन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है.
ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशंस के ऊपर। तो आप बोलोगे कि सर अगर आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो कि स्ट्रेस को मेजर कर ले डायरेक्टली, तो हम स्ट्रेस को मेजर कैसे करते हैं फिर? तो मेरा आंसर होगा इसी लॉ से, हुक्स लॉ से। बिकॉज हुक्स लॉ में आपको ई है, ई आपको मटेरियल का पता होता है, क्लियर। इसके बाद आपका इसमें है स्ट्रेन। स्ट्रेन को निकालने के लिए हमारे पास एक रोजेट सिस्टम होता है या स्ट्रेन गेज होती है, और स्ट्रेन गेज से कितना डिफॉर्मेशन हुआ है ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन स्ट्रेस को अगर आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू यूज द हुक्स लॉ और कंपैटिबिलिटी कंडीशंस और कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशंस और इक्वेशंस, ये आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है। लेकिन बस आप ध्यान रखना, यही मैंने यहां पे लिखा भी हुआ नोट के ऊपर, strain can be measured by strain gauge or rosette, but stress cannot be measured directly. Stress can only be measured by Hooke's law or the compatibility equations or the conditions. That is what the important point is. Clear students? आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो कि स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर कर ले। आप स्ट्रेन को मेजर करके वहां से इनडायरेक्टली हुक्स लॉ से आप निकाल सकते हो, वो एक अलग कहानी है, क्लियर। लेकिन आप स्ट्रेस को डायरेक्टली मेजर आप नहीं कर सकते, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप एक यूटीएम के अंदर, ये आपका यूटीएम था, दिस वाज द अपर जॉ, दिस वाज द लोअर जॉ, और आपने जब मटेरियल को खींचा तो स्टूडेंट्स आपका एक ग्राफ बनता है विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, विच यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर ऑल्सो। So on the y-axis you have the stress, that is sigma. On the x-axis you have the strain, that is epsilon. So this is the stress versus strain curve. ये कर्व ऐसा जाता कैसे है, फिर ये ऐसे आता कैसे है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में सब बताने वाला हूं, बट आप ध्यान दीजिएगा ये आपका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है। यहां से लेकर के यहां तक का जो जोन है आपका, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्यों पिक्चर में आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, clear। This is called as a necking, and from this position to this last one, this is called as the ductility also, ductility, clear। Young's modulus of elasticity, we know that sigma is equal to E into epsilon, E will be equal to sigma upon epsilon. So if you compare it with this, y is equal to mx plus c, or y is equal to mx, m is going to be this E. What was m here in mathematics? That is slope. इसका मतलब कि अगर आप इसका स्लोप निकाल दो, ये थीटा निकाल दो, तो थीटा एक्चुअल में आपका ई के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्लियर। आई होप दैट यू हैव गॉट इट, द मीनिंग ऑफ दिस यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कि आप यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे निकाल सकते हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व से, कैसे आप निकाल सकते हो इसको, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन, दैट इज you can go for the Testbook Pass students. So we have one pass for more than 100 plus courses. You will be getting an access to more than 6,500 plus mock tests. Currently it is more than 17,000. A lot of selections we have already made in different competitive exams. You will also be getting a good exam strategy as well as the expert guidance. And the Testbook Pass is only for rupees 499. It is a lifetime pass sale which is going on right now. Also students, it will be valid for next 3 years. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपको गेट सिविल इंजीनियरिंग 2022 की प्रिपरेशन करनी है तो आप अपने लिए ये वाला बैच या कोर्स ले सकते हो। ये एक पेड कोर्स है, लेकिन आप ये कूपन कोड को एंटर कर सकते हो, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी, वरुण और के, या फिर सारे लेटर्स कैपिटल में और के भी आपका कैपिटल में, वरुण के, और आपको जो है 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसमें एक हल्का सा डिफॉर्मेशन रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, बिकॉज बच्चों को लगता है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही इलास्टिक लिमिट है आपकी, ऐसा नहीं है। इलास्टिक लिमिट थोड़ा सा आगे होती है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, क्लियर। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे अगर आपने लोड को रिमूव कर दिया तो लोड बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी, लेकिन
अगर आपने इलास्टिक लिमिट पे रिमूव किया तो बॉडी पोजीशन पे वापस आएगी, लेकिन देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन, 0.1 mm, 0.2 mm, वॉट एवर. बट सिंस ये जो इलास्टिक लिमिट है, दिस इलास्टिक लिमिट, दिस इज वेरी मच नियर टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलो तो समझ में आता है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोलो तो समझ में आता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही थिन डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको अभी बताया. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स यू विल हैव अपर यील्ड पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द अपर यील्ड पॉइंट. ये अपर यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में आ जाएगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द लोअर यील्ड पॉइंट. This point is called as the ultimate strength point or FU point, and this point is called as the fracture point. Clear? Now students, ये जो भी आपको ग्राफ देखने को मिला है यहां पे, it is for a ductile material. Ductile material. अब आप पूछोगे सर ये ductile material क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ऐसा मटेरियल जिसपे कि अगर आप लोड लगाओ तो उसमें डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा होती है, दैट इज सेड टू बी एज अ डक्टाइल मटेरियल. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का तार है, या स्टील का तार, स्टील का तो नहीं, कॉपर का वायर है, या फिर सिल्वर का वायर है. इफ यू विल स्ट्रेच इट, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ, कीप ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ, एंड दोस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर सेड टू बी एज द डक्टाइल मटेरियल. क्लियर? सो दिस ग्राफ इज फॉर द डक्टाइल मटेरियल. अब मैं आपको जरा समझाता हूं एक्चुअल में होता क्या है. देखिए स्टूडेंट जरा, ये आपकी एक बॉडी है जिसको कि आपने मान लीजिए कि आपने पुल दिया है, यू हैव गिवन इट अ पुल फॉर एग्जांपल. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द वाई एक्सिस सिग्मा, दिस इज द एक्स एक्सिस दैट इज एप्सिलॉन. नाउ स्टूडेंट्स होता क्या है, इनिशियली व्हेन यू हैव नॉट अप्लाइड एनी लोड, द स्ट्रेस इज गोइंग टू बी जीरो. सिंपल. अगर आपने लोड लगाया तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉडी. तो ये मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपस में रेजिस्टिंग फोर्स को शो करेंगे. क्यों करेंगे रेजिस्टिंग फोर्स को शो? बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके बहुत ही पास पास हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय a constant k into mass of one particle, mass of second particle upon the distance between them whole square. Clear students? So इनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है आपका ये काफी कम हो गया. अगर ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है तो जो भी आप ये लोड लगाओगे P, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इसको रेजिस्ट करेंगे, दैट इज द R फोर्स. सो द स्ट्रेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. After a certain point student which is said to be as the upper yield point, upper yield point पे क्या होगा, जब ये पार्टिकल स्टूडेंट्स हल्के हल्के अपने से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब ये दूर होना चालू हो जाएंगे, बिकॉज ये जो आपने लोड अप्लाई किया इसकी वजह से जो एनर्जी लगेगी ये इन पार्टिकल्स के बीच की जो एनर्जी है उससे ज्यादा होगी. और जब वो एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल की जो लेयर्स है ये दूर होनी चालू हो जाएगी. और जब दूर होनी चालू हो जाएगी तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपर रेजिस्टिंग फोर्स शो नहीं कर पाएंगे. और जब पार्टिकल्स प्रॉपर रेजिस्टिंग फोर्स शो नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. तो रेजिस्टिंग फोर्स आपका कम होता रहेगा तो स्ट्रेस भी आपका कम होता रहेगा, एंड यू विल फाइंड दैट द स्ट्रेस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द अपर यील्ड पॉइंट. यील्डिंग का मतलब होता है कि लेयर्स का एक से दूसरे से दूर जाना, और यील्डिंग में आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका आना चालू हो जाता है. इसके बाद स्टूडेंट जब आपके पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, अब होगा क्या, अब ये दोबारा से एक सिमेट्री में आ गए. सिमेट्री बोले तो देखिए जरा, ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स, 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 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स. इनिशियली ये ऐसा कुछ था. जब आपने यहां से लोड लगाना चालू किया तो ये मान लीजिए कि ये जो लेयर थी आपकी, ये इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा. ऐसे ही इसके एडजेसेंट में भी कोई लेयर होगी स्टूडेंट्स, तो ये जो होगा ये इससे दूर जाएगा, ये इससे दूर जाएगा. ये जो होगा ये इससे दूर जाएगा, इससे दूर जाएगा. इससे क्या होगा, ये जो दो लेयर्स हैं ये आपस में पास पास आ जाएंगी, और कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा. ऐसा इनके बीच में तो डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन ये पार्टिकल्स फिर दोबारा आपके पास पास आ चुके हैं. ऐसा आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स. इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोबारा ओरिएंटेशन की स्टेबिलिटी आ जाना.
और जब दोबारा ओरिएंटेशन की स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर से ये आपको रेजिस्टिंग फोर्स शो करना स्टार्ट कर देगा। और जहां इसने रेजिस्टिंग फोर्स शो करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस भी आपका बढ़ जाएगा, और इसीलिए फिर आपको लोअर यील्ड पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद आपको फिर दोबारा से इंक्रीज होना चालू होता है। यहां पे क्या हो चुका है, दोबारा स्टेबिलिटी आ चुकी है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द लोअर यील्ड पॉइंट। ये दोबारा बढ़ना चालू होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जब आप और लोड बढ़ाओगे, अब फिर दोबारा पार्टिकल्स और दूर और दूर और दूर जाते रहेंगे। पार्टिकल इतने दूर पहुंच जाएंगे कि पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये काफी कम हो जाएगा। बिकॉज आर अगर आपका बहुत बढ़ गया तो ये आपका कंसिडरेबली आपका रिड्यूस आपका हो जाएगा। आपका फोर्स अगर बहुत कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये फिर आपका दोबारा ऐसे कम होना आपका चालू हो जाएगा। Clear? And student, this zone is called as the strain hardening zone. This zone is called as the strain hardening zone. गेट एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था स्ट्रेन हार्डनिंग जोन के ऊपर, कि स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में क्या होता है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में जो आपका स्ट्रेस होता है, ये यील्ड स्ट्रेस से भी ऊपर पहुंच जाता है। ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? तो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस से भी ऊपर आपका पहुंच जाता है स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। इंपॉर्टेंट है, गेट 2021 में ये ऑलरेडी आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया, जो भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो स्लोप होगा, दैट इज व्हाट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। इलास्टिक लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। यहां पे आपको परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, पर बहुत ही कम होता है वो, इट इज वेरी निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। और यहां पे आपको ओरिजिनल पोजीशन पे वो वापस आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन वो आपका रीगेन कर लेगा, रीगेन कर लेगा। क्लियर? अपर यील्ड पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट का ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं नेकिंग की। ये नेकिंग क्या है स्टूडेंट, देखिए जरा, इस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में ये जो पोर्शन है आपका, इसको बोला जाता है नेकिंग। नेकिंग क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई एक, लेट अस से स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है कोई एक मटेरियल है, दिस इज सम मटेरियल। आपने यहां पे एक लोड लगाया, ये वाला, यहां पे एक लोड लगाया, ये वाला, एंड लेट अस से इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, इट इज अ डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जब आप इसको एलोंगेशन करोगे, इसकी लेंथ तो इसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम होता रहेगा। द क्रॉस सेक्शन एरिया विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बट द लेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, एट अ सर्टेन पॉइंट ये होगा क्या, मान लो कि यहां से टूटना है, टूटने से पहले ये ना धागे जैसा बन जाएगा, एकदम धागे जैसा, एकदम इस टाइप का, एकदम धागे जैसा बन जाएगा, एकदम लाइक दिस, राइट। और टूटने से जस्ट पहले ये आपको कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेगा स्टूडेंट्स, टूटने से जस्ट पहले। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द नेकिंग। नेकिंग क्यों स्टूडेंट्स, बिकॉज गर्दन बहुत ही पतली है, राइट, गर्दन बहुत ही पतली है, तो यहां से जहां से पतला हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज सेड टू बी एज अ नेकिंग पोर्शन। इसके बाद क्या करोगे, जब आप और लोड अप्लाई करोगे, फिर क्या हो जाएगा, ये आपका फेलियर हो जाएगा। और डक्टाइल मटेरियल में कौन सा फेलियर होता है, डक्टाइल मटेरियल में आपका होता है कप एंड कोन फेलियर, कप एंड कोन फेलियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कप एंड कोन फेलियर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, टूटने से पहले अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, क्लियर, ये ऐसे हो जाएगा like this in case of a ductile material, right? So this is what is called as a cup. ये आपका हो गया कप, और ये आपका सॉरी ये आपका हो गया कोन, सॉरी ये आपका हो गया कोन, एंड दिस इज व्हाट द कप इज। सो कप एंड कोन फेलियर स्टूडेंट्स, राइट, एक दूसरे को आपस में फिट कर देंगे, दैट इज व्हाट द कप एंड कोन फेलियर इज। आई होप ये आपको समझ में आया। ये पूरा मैं आपको किस्सा बता रहा हूं डक्टाइल का, ब्रिटल में आपका हल्का सा किस्सा अलग होता है, अभी आपको समझाऊंगा किस्सा क्या होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने लोअर यील्ड पॉइंट तक लोड हटा दिया, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लोअर यील्ड पॉइंट तक लोड हटा दिया तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पे ना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट तक, चलिए मान लिया। लेकिन जब परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा और ये जो ग्राफ जो फॉलो करेगा ना, आपका जो ये कर्व है, आपका जो मटेरियल है, जो ग्राफ फॉलो करेगा ना,
ये तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ ही जाएगा, वो तो कंफर्म है, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन पीडी। लेकिन ये जो ग्राफ फॉलो करेगा ना स्टूडेंट्स, को बोलते हैं बैक ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये दोनों स्लोप आपके बराबर होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कई बार यहां से जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट, ये आप ध्यान दीजिएगा। Yes, good morning, Benny, good morning. So just keep this thing in mind that the slope of the returning curve is going to be equal to the slope of the forward curve. From this particular topic, many questions have been asked in the recent competitive exams. I have got one numerical for you also, which I will be solving at the end of this particular lecture. And you will come to know कि इसका फायदा क्या है, what is the advantage of this particular concept. You will come to know that. Clear, students? Now, let us proceed further. Then we have the ultimate point. Now at ultimate point, what happens is that the maximum stress a material can sustain is called as the ultimate stress, and that point is called as the ultimate point. So these are some of the important points of stress versus strain curve. Stress versus strain curve. Clear? And all these terms were for the ductile material. In brittle material, there is some other issue. I will be telling you what is the issue in the case of the brittle material. Clear? But that is what is called as the ductile material. Now, students, we have some important terms we should always take into consideration. First is called as the engineering stress. Engineering stress is nothing but sigma is equal to resisting force per unit original area. But students, we know that the original area keeps on changing. If the original area keeps on changing, we cannot use the engineering stress as the most accurate stress. Because we know that this is a body. If you apply some tensile force, the cross section area original was A naught, but the cross section area will keep on changing. It will keep on reducing if it is a tensile force. So this A naught will not going to be constant. But in engineering stress, whatever the load you are applying, divide by the original cross section area, that is what is called as the engineering stress. Or strength of material, means strength of material. When I will be telling you that engineering stress, the first thing we should strike in your mind is that it is divided by the original area. Clear? So it is the applied load divided by the original cross section area of the material, that is what is called as the engineering stress or the nominal stress. Clear? Now what is true stress? It is the load applied divided by the actual cross section area, because the cross section area keeps on changing. Okay, so I can say that sigma is equal to resisting force upon the actual cross section area, and this A keeps on changing as the strain is changing. So it keeps on changing. Clear? I hope that you have got it. I hope that you have got it. So students, that is what it is. Now then we have the engineering strain. Again the same thing. Engineering strain is defined as change in length upon the original length. This is what the engineering strain is. But the length keeps on changing, right? The length keeps on changing. अभी आपका L1 है, कल ही आपका L2 हो जाएगा, फिर आपका L3 हो जाएगा. It will keep on changing. So true strain is defined as natural logarithm of the current length upon the original length, or L2 upon L1. This is what the true strain is all about. Important है स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में आ चुका है, राइट? इंपॉर्टेंट है ये वाला. Now we also know that stretch ratio. Now what is the stretch ratio? That is given by lambda. Stretch ratio lambda is nothing but the change in length upon the original length. That is what the lambda is, right? So students, what you can do is that
I hope that students I am audible to you. There was some connection issue, I guess. Okay. So student, what I was telling you about the stretch ratio. So stretch ratio is the final length upon the original length is called as the stretch ratio. So students, what we can do is that we can also write this true strain can also be written as this. This true strain, students, can also be written as, from here, the true strain can also be written as natural logarithm of the lambda. This is also important. This is also important. Clear? I hope that you have got it. Now, so let us proceed further. The true strain, what is this true strain? Which is also called as the Henke strain or the logarithmic strain or the natural strain or the true strain. One at the same thing. एक ही बात है. आप कुछ भी नाम दीजिए इसको, एक ही बात है. It is equal to the natural log of the quotient of the current length over the original length. Important for the GATE exam point of view. It is very, very, very important. It is very, very, very important for the GATE exam point of view. Clear, students? For the GATE exam point of view, this particular point is very, very, very important. Now, students, let us proceed further. The next one is called as the shear strain. Shear strain, just I have told you, it is a strain produced under the action of shear stress. Not an issue in that. That is a very simple thing. Then we have the superficial strain. Superficial strain is what? That is the change in area upon the original cross-section area. So superficial strain is given by S, that is equal to the change in area divided by the original cross-section area. This is what is called as the superficial strain. The definition is important. Definition is important. The definition is important. Only definition is important. As far as the numericals are concerned, from this topic, numericals are generally not asked in the GATE exam. That is the superficial strain, but this definition is important. Clear? Then we have the volumetric strain. Again, the same thing. Volumetric strain is nothing but the change in volume divided by the original volume. That is what the volumetric strain is. Now, what is the stretch ratio? The final length upon the original length. The final length upon the original length. This is what the stretch ratio is. For example, students, let us say this is a material. If you apply some load in this direction, P and P, this is my L1, and after some time it becomes L2. After some time it becomes equal to L2, then stretch ratio is defined as nothing but L2 upon L1. This is what the stretch ratio or the lambda is. Clear, students? So that is what I have written here. I have also written that. I have also written here, students, is that. Clear? This is what it is, right? So I have also written is that epsilon t is equal to ln of lambda. Okay. Now, there is one more thing. One more thing is that, students, lambda is coming out to be equal to epsilon, true strain is coming out to be equal to how much? Ln of lambda. Now, students, can you also write that lambda is equal to e raised to the power epsilon t? You can also do it like this, right? Now, students, what is e raised to the power x? That is 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x4 upon 4 factorial plus so on. In mathematics, we have already learned this thing. So, can I also write that this lambda is nothing but 1 plus epsilon t square upon 2 factorial plus epsilon t cube upon 3 factorial plus epsilon t whole 4 upon 4 factorial and plus so on up to the infinity. So this is also one of the definitions of this lambda is important. In one of the examinations, I guess it was ISRO exam. In ISRO exam, this definition was actually asked, or the expression of the lambda was asked in terms of the true strain. Clear? So that is how you can also write it. Right? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ISRO एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर.
So students, the next important thing is comparison of the engineering and the true stress strain curve. So students, if you see this figure, students, what is happening is that कि ये जो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, ये आपका नीचे चला गया और ट्रू वाला आपका ऊपर चला गया. ये ट्रू आपका ऐसे ऊपर चला गया और ऐसे इंजीनियरिंग आपका ऐसे नीचे चला गया. ये ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन इज द डेफिनेशन. बिकॉज वी नो दैट द ट्रू स्ट्रेस sigma t is equal to a resisting force per unit the actual area, and the actual area in case of the tensile test it keeps on decreasing. और भाई अगर ये डिक्रीज होता रहेगा, ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की आपका सिग्मा टी आपका ज्यादा होता रहेगा एज कंपेयर टू द इंजीनियरिंग स्ट्रेन. एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर इज राइट. The true stress strain curve is also called as the flow curve. This was a question recently in one of the state AE exam, but not GATE exam. True stress strain curve gives a true indication of deformation characteristic because it is based on the instantaneous dimension of the specimen. In engineering stress strain curve, stress drops down to after necking since it is based on the original area. In true stress strain curve, the stress however increases after necking since the cross-section area of the specimen decreases rapidly after the necking, and hence the stress keeps on increasing after the necking. So this is very, very, very important. So let me write it here also. This curve is very, very, very important. The curve between the true stress strain versus the engineering stress and strain. Clear students? I hope that you have got it. I hope that you have got it. Everyone. And before proceeding further students, let me tell you a very important thing. You can go for the Testbook Pass, because I always recommend that whenever you are going for any competitive exam, you should give n number of mock tests before going for any competitive exam. So you can go for the Testbook Pass. So we have one pass for more than 100 plus courses. You will be getting an access to a lot of tests, right? A mock test. Also, we have done a lot of selections in different competitive exams. You will also be getting a good exam strategy as well as the expert guidance. And the Testbook Pass is only for rupees 499 and it is valid for next 3 years. So it is once in a lifetime sale which is going on the Testbook platform. ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को गेट सिविल इंजीनियरिंग 2022 बैच के लिए प्रिपरेशन करनी है स्टूडेंट, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन सितंबर तक आ जाएगा इसका. सो आप जो है टेक्स्ट बुक की साइट पे जाकर के लिए अपने लिए कोर्स ले सकते हो. इट इज अ पेड कोर्स बट आई कैन हेल्प यू इन वन वे. यू कैन एंटर दिस कोड विच इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. Coupon code that is Varun and a capital of K, and you will be getting a flat discount of around 20%. और सिर्फ इस वाले कोर्स में नहीं, on the textbook site, if you will use this code on any of the courses, you will be getting a flat discount of around 20%. Now students, let us proceed further. अब आगे चलते हैं, जरा और इसके बारे में बात करते हैं. Let us discuss about it a little bit more. Now students, so this is what the true stress versus strain curve is. Let me take a different marker here, then you will get it much more clearly. See here students, this is the true stress versus strain curve, this is the rupture strength, and this is the engineering stress versus strain curve. This is engineering and this is true, right? So after necking, what is happening is that after necking this particular portion, it just keeps on increasing. Why is it increasing? Because the area suddenly keeps on decreasing. So this is the conventional stress versus strain curve, and this is what it is, right? This zone is called as the strain hardening zone. From this position, from this to this, this is called as the strain hardening zone, not from here. From here to here, it is called as the strain hardening zone. क्लियर? इफ यू रिमूव, अगर आप डी तक भी मटेरियल को रिमूव करते हो ना, लोड को रिमूव करते हो, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन इसका जो स्लोप होगा ना, वो इसकी स्लोप के बराबर होगा. चलिए, now based on the stress versus strain curve students, we can define the various types of materials, right? But before that, let me tell you about the stress versus strain curve in a brittle material. Stress versus strain curve in brittle material. Brittle
मटेरियल। क्वेश्चन ये कि सर ये ब्रिटल मटेरियल होता क्या है स्टूडेंट्स? लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास इज अ ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं स्टूडेंट्स कि जिसमें डिफॉर्मेशन होगी लेकिन आपको वो मटेरियल टूटने से पहले इंडिकेशन नहीं देगा, एकदम से टूट जाएगा। Brittle materials are those materials which do not give any indication before failure. They just break at once without giving any indication. For example, glass. If you throw a stone on a glass, it will, without giving you any indication, it will break. Clear? So these materials are called as the brittle materials. So if you draw the stress versus strain curve in a brittle material, students, what is going to happen is that the strain is going to be less as compared to the डक्टाइल मटेरियल। तो स्ट्रेन कम होगा आपका, ऐसा कुछ होगा आपका ऐसा, और फिर आपका ऐसा जाएगा और ये टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। नाउ स्टूडेंट्स, इन दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आपको ना एक पीक देखने को नहीं मिलेगा, और अगर एक पीक देखने को नहीं मिलेगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू नो द यील्ड पॉइंट ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल। तो हम लोग करते क्या है, 0.2% स्ट्रेन पे क्या किया, 0.2% स्ट्रेन, या मैं इसको बोलूं 0.002 स्ट्रेन पे आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। यू विल बी ड्रॉइंग अ पैरेलल लाइन, एंड वेयर एवर दिस पैरेलल लाइन इज मीटिंग दिस पर्टिकुलर कर्व, दिस पॉइंट इज सेड टू बी एज द यील्ड स्ट्रेस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, एंड दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड एज नथिंग बट द proof strain. So this is what the concept of the proof stress and the proof strain is. Proof means maximum. Proof means maximum. Proof stands for the maximum. So that is how you can get the proof stress and strain. Clear? तो आपका जो डक्टाइल मटेरियल का जो कर्व है स्टूडेंट्स बहुत ही शार्प होगा, स्टीप होगा। अगर डक्टाइल बनाओगे तो डक्टाइल आपका ऐसे कुछ जाएगा, दिस इज द डक्टाइल, दिस इज गोइंग टू बी द ब्रिटल मटेरियल। इसमें डिफॉर्मेशन कम होता है, इसका यील्ड स्ट्रेस ज्यादा होता है, लेकिन ये विदाउट गिविंग एनी इंडिकेशन इट जस्ट ब्रेक्स, बिकॉज द डक्टाइल मटेरियल वाज गिविंग यू सो मेनी इंडिकेशंस, here also, here also, here also, so many indications, and after that it breaks. Ductile material does not give you any indication, it just breaks at once. Clear? Now students, let us understand about the different types of materials that we have in the strength of materials. The first material is called as the linear elastic material, in which the stress versus strain curve is completely linear. These materials are called as the linear elastic materials. Clear? Then we have ideal plastic. Initially they will say elastic behavior, and after that they will say show the plastic behavior. So these materials are said to be as the ideal plastic materials. After that we have the rigid material. Rigid material will show you just like this, solid, perfectly rigid, only this line. This is the rigid material, or which is also called as perfectly solid. Perfectly solid. So no strain is there. जो perfectly solid होगा उसमें कोई भी strain आपका develop नहीं होगा. No strain is going to be developed. After this we have the elastoplastic. First they see the elastic, and then they show the plastic, not purely plastic but elastoplastic, like this. And this modulus, this theta, is called as the tangent modulus. This is the Young's modulus, theta. This is what is called as the tangent modulus. I have shown in the figure also. After this we have the rigid plastic. First of all they will show a rigid behavior, and after that they will show a plastic behavior. These are said to be as the rigid plastic or perfectly plastic. Ideal plastic is something else. This is what the ideal plastic is. This is what the ideal plastic is, and rigid plastic is something else, or perfectly plastic is something else, right? So there is a difference between perfectly plastic and the ideal plastic. Then we have the linear hardening or the rigid elastic material. They show this type of behavior like this, right? First of all they show this behavior, rigid, and then they show elastoplastic behavior. So these are also called as the rigid elastic materials. So these are the various types of materials. In GATE exam, all these questions have been asked. For GATE exam, this is an important question, important topic, because all these questions have already been asked in the GATE exam. Clear, students? Now let us proceed further. Then how do we compare the various materials based on the stress versus strain curve? For GATE exam, this is very, very important. See students, you can see from this particular figure, let me change the marker. Now if you see this, this is my A. So A is highly ductile. A is the strongest, it is the stiffest, और बहुत ज़्यादा ductile है आपका ये. Clear? Then
So it is highly brittle, sorry, it is highly brittle, right? Now students, but B is the most brittle. Why? Because here before failing it was showing you a little bit of elasticity. See here, this much is the total deformation here, but B is not showing you any deformation. B is just breaking at once, and hence B is the most brittle. So B is the, I hope it I have written, yeah, written here also. So B is the most brittle because it fractures suddenly without giving you any indication. In A also there was a little bit of indication, but in B there is no indication. C is most ductile. Why? Because a lot of deformation is there. This ductile is a lot of deformation most. And D जो है आपका, it lies in between. So D has this much of deformation. Okay. So I hope that you have got it. How you can compare. जो ग्राफ एकदम से ब्रेक हो गया ना, एकदम से ब्रेक हो गया, वो हाईली डक्टाइल है आपका, ध्यान दीजिएगा. विदाउट गिविंग एनी डिफॉर्म इंडिकेशन, अगर वो टूट जाता है, इट इज हाईली डक्टाइल. नाउ स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड फर्दर. Now, this is important. This actually I have already told you. In metals, if loading is done within the elastic limit and then unloading and loading curves are equal, if loading is done beyond the elastic limit, then loading and unloading curves are different. However, unloading curve is parallel to the initial part of the curve. In other words, the slope of the unloading curve is the same as that of the loading curve. This is a very important concept, students. I have already told you that अगर आप इसको लोड को यहाँ पे रिमूव करते हो यहाँ पे, तो आपका एक परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आ जाएगा, बट स्टिल दिस कर्व इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर कर्व. क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान दीजिएगा. यहां से कई बार गेट एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल आ चुके हैं. इन गेट एग्जाम न्यूमेरिकल्स हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द गेट एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. क्लियर? आई होप दैट यू हैव गॉट इट. नाउ next is, students, now let us understand about some of the properties. The first property is called as the ductility and brittleness. The second is the toughness and modulus of toughness, and third one is the proof stress and strain. Now students, let us understand what is this ductility, what is this brittleness with the help of the stress versus strain curve. Till now, I have told you the ductility and brittleness just by giving you some examples of ductility and brittleness. But now let us understand that what is happening in the stress versus strain curve. Now students, see, ये आपका stress versus strain curve है. Let me draw the stress versus strain curve like this. Okay. Let us say this is some material which is showing you this type of graph. Now, this is the material, and you are applying some load here. Clear? You are applying some load here, and the deformation is obviously there. This is much as the deformation. Students, if this change in deformation, let us say this delta L upon the original length, clear? If it is less than 5%, if it is less than 5%, or I can say 0.05. See here I have written, if the percentage elongation is less than 5%, it is said to be as a brittle material. So mathematically, if somebody asks you what is brittle material, you should be able to explain him. Graphically, what is brittle material? This is what the brittle material is. Without giving you any indication, it will break. But mathematically, if the percentage elongation is less than 5%, it is said to be as a brittle material. And if the percentage elongation, that is del L upon L into 100, it is more than how much? It is more than 15%, that is said to be as a ductile material. So that is what I have written here. It is said to be as a ductile or a completely ductile material. And if it lies between 5 to 15%, it is intermediate ductile. In GATE exam, these questions have already been asked. So for GATE exam, it is important. I hope you are getting it, right? For GATE exam, this particular point is important. Hello, hi, yes, Rajput ji, कैसे हैं आप? Yes, hi. चलिए, students, आगे बढ़ते. Let us proceed further. Now, students, what is this toughness and modulus of toughness? इसको समझाने के लिए students जरा मैं बात करता हूं एनर्जी की. If you punch your friend and your friend doesn't move at all, what will you say?
यार तू तो बड़ा टफ है, यू आर वेरी टफ मैन. Clear? Now, toughness stands for how much energy a particular material can absorb before failing. Or I can say how much energy a particular material can absorb per unit volume. That is what is called as the toughness. Clear? That is what is called as the toughness. हिंदी बोलिए. हाँ जी, मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूं राजपूत जी. आप किसकी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजपूत जी? आप या हिंदी की भी बात हो रही है यहां पे, हिंदी में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजपूत जी, आप चिंता मत कीजिए. आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं राजपूत जी? गेट में तो क्योंकि आप गेट की अगर तैयारी कर रहे हो, दिस बैच इज फॉर द गेट एग्जाम. अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट में तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, बिकॉज गेट का पेपर तो इंग्लिश में होगा आपका, राइट? द गेट एग्जाम इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश. यहां पे जो प्रिपरेशन चल रही है वो गेट की चल रही है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है. चलिए, now students, so this is what the toughness is and this is what the modulus of toughness is. Oh sorry, what is toughness? The how much energy can it absorb per unit volume, that is what the toughness is. Clear? Now students, let us understand with the help of a graph what is the meaning of toughness and modulus of toughness. तो जब भी आप ग्राफ बनाते हो स्टूडेंट्स, आपके दो ग्राफ बनते हैं. एक आपका ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. So this is my stress, this is my strain. So let us say it is a ductile material. So this is the stress versus strain curve of a ductile material. And for a brittle material, this is the stress versus strain curve of a brittle material, like this. Clear? चलिए. Now students, अब जरा देखिए, अगर आप इस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का अगर आप एरिया निकाल देते हो यहां तक, this is what is called as the modulus of toughness. Modulus of toughness. अगर आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकाल देते हो अप टू द फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडुलस ऑफ टफनेस. और मान लीजिए कि ये आपका लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व है, और इस लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का अगर आप एरिया यहां तक का निकाल देते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द टफनेस. कहां तक का? जहां तक वो फेल नहीं होता, फेलियर तक का आपको एरिया निकालना है, रप्चर तक का. ये है आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस. मॉडुलस ऑफ टफनेस को अगर मैं ऐसे बोलूं तो ये होता आपका होता, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. That is what the volume or modulus of toughness is. Energy per unit volume. Clear? And what is this toughness? It is just half into load into deflection. So that is equal to the modulus of toughness up to fracture. Up to fracture. तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस और टफनेस में. एक्चुअल में दोनों जो है आप एक दूसरे को इस्तेमाल करते हो, एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली आप उसको इस्तेमाल करते हो. इफ somebody says that modulus of toughness, that means that it is toughness. If somebody says it is toughness, that means it is modulus of toughness. Clear? आप उसको इंटरचेंजेबली आप उसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसका मतलब उसका अलग अलग है. मतलब अलग अलग है. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो एरिया है दैट इज सेड टू बी एज अ मॉडुलस ऑफ टफनेस, और लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का जो एरिया है दैट इज सेड टू बी जस्ट टफनेस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. Clear? Now students, that is all for today because already time काफी हो चुका है. That is all for today. We will be meeting in the next lecture, and in the next lecture we will be discussing about some more properties of materials. That is, we have the resilience, proof resilience, modulus of resilience, strain energy, right? Apart from it, we also have the hardness, creep, fatigue, right? We have the strength, failure, strength parameters, failure parameters, malleability, stiffness, hardness. All these properties along with the questions we'll be discussing in the next lecture. So thank you everyone. Have a nice day. Bye bye. Take care. You just take care of your family also, students, right? So आप ध्यान रखिए अपना. Bye students. Take care. Let's meet in the next lecture.